Heterotrophic nutrition. Organisms which cannot make their own food and are dependent on other organisms like plants and animals are called as heterotrophs, and this mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते और वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन की यह मेथड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ह्यूमन्स सहित जितने भी एनिमल्स हैं सब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। Nutrition in plants. Nutrition in plants. All the living organisms require food. The organisms need to take food to obtain energy, to obtain material for growth, and to obtain materials for the repairs of damaged parts of body. The process of taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition. Modes of nutrition. All the organisms can be divided into two main groups. 1. Autotrophs. 2. Heterotrophs. Autotroph. Those organisms which can make food themselves from simple substances like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs, and their mode of nutrition is called autotrophic. For example, green plants. Heterotroph. Those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotrophs, and their mode of nutrition is called heterotrophic. All the non-green plants and animals, including human beings, are heterotrophs. Photosynthesis, the process by which ये रहे आपके न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिशंस के मोड, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट क्लासेस। ओके, बाय।